implemented the first idea which I have given to you to make quick gains from the market? I hope so. Now, if you have gone through that reason for you to enter into a trade, now the second important thing which you have to do in order to gain quick profits in the market is a professional trading concept, which is profit averaging. All the professional traders, all of them, every single profitable and professional trader, he or she uses this technique. हर एक अच्छा ट्रेडर, हर एक सफल ट्रेडर, हर एक प्रोफेशनल ट्रेडर, FII, DI, hedge fund managers, proprietary traders, all of them, they all use this concept which is called as profit average. Again, this is a part of your risk management. कल हमने पहली चीज सीखी थी रिस्क मैनेजमेंट की, और वो चीज ये थी कि आपको ट्रेड में एंटर करने का की एक वजह होनी चाहिए, राइट? और वो वजह क्या थी? दैट कुड बी योर 1 कैंडल सेटअप, दैट कुड बी योर 2 कैंडल सेटअप, और दैट कुड बी योर 3 कैंडल सेटअप. दैट्स क्वाइट फाइन. बट after entering into a trade, to make a sizable profit, you need to do profit average. Do it. Now, how it happens? Let me just elaborate this concept to you. Always make a thumb rule. जब भी आप किसी ट्रेड में एंटर करेंगे, always enter with a 50% quantity only. कभी भी मान लीजिए अगर आपकी कैपेसिटी 10 लॉट की है ना, तो कभी भी आप 10 की 10 लॉट मत खरीदिए. ऑलवेज ट्राई टू एंटर विद द 5 लॉट्स ओनली, राइट? ओनली if you are trading with only one lot, that then only we don't have this option. Otherwise, if you are trading more than one lot, you should always enter with the 50% quantity. क्या होता है 50% क्वांटिटी से? हम जब भी एंटर करते हैं, लेट द मार्केट रिएक्ट इन अ वे यू वांट इट टू रिएक्ट. हाउ इज दिस, राइट? पहले बाजार को आपके हिसाब से चलने दीजिए, एंड वंस इट स्टार्ट्स रिएक्टिंग, वंस इट स्टार्ट्स मूविंग एज पर यू, देन यू एड ऑन टू इट. I teach my traders the 2 possible areas, 2 possible and definite profit averaging locations, right? So you are allowed to do profit averaging twice. ठीक है, 2 बार आप profit averaging कर सकते हैं. So once it starts moving up or moving down or moving as expected, you can do a profit averaging. Do it. And then tell me, you'll see the magic of this professional trading concept, right? तो पहली बात आपको प्रॉफिट एवरेजिंग करनी, और लॉजिक इसके पीछे ये है कि अगर आप सही होंगे, यू आर एडिंग एंड you started with 50% and you are now with a 150% quantity with you under the same risk management, right? But if you are wrong, then you are only wrong with the 50% quantity, not even with your full quantity, 100% quantity. So that way you are lowering your risk, yes, and at the same time you are expanding your profits, you are expanding your profitability, right? How's the idea? Comment below, how's the idea? तो आपको क्या करना है? 50% क्वांटिटी से एंटर करना है. अगर आप गलत है, 50% पे स्टॉप लॉस जाएगा, जाने दीजिए. अगर आप सही है, ऐड 2 बार ऐड करना अलाउड है. once you have added into profits for 2 times, you are done, and then let the winners ride as long as market allows it to ride. Yes, so use it, yeah. And I'll see you in the 3rd tip for quick profits. Thank you. Bye-bye. Take care.